Number 1, International Translation Day is celebrated on which day of September? It is celebrated on 30th of September. Okay. Answer is 30th of September. Number 2, what is the theme for this year's World Heart Day? So first of all, World Heart Day is celebrated on 29th of September. Okay. And what was the theme for 2020 World Heart Day? It was use heart to beat CVD. CVD means cardiovascular diseases. Number 3, World Rabies Day is observed on September 28. Okay. To mark the death anniversary of which noted microbiologist? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है एंड 28 सितंबर इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुई पास्चर. ओके, सो आंसर इज लुई पास्चर. Number 4, India was ranked dash among 181 countries on the World Risk Index WRI 2020 released by United Nations University. World Risk Index United Nations University रिलीज करती है एंड इंडिया वॉज रैंक्ड 89th. सो वर्ल्ड रिस्क में इंडिया कहाँ पर है? 89th पे है. Number 5, which country was placed on top of World Risk Index being the riskiest country? So riskiest country कौन सी है? Vanuatu. Okay, Vanuatu. Number 6, which country was ranked as the safest country on the World Risk Index? Safest country कौन सी है? It's Qatar. Okay, Qatar is the safest country on World Risk Index. Which state won the United Nations Award for its excellent contribution toward the non-communicable disease related sustainable development goal? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से रिलेटेड जो सस्टेनेबल गोल है उसमें कौन सी स्टेट को यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला है? इट्स केरला. आंसर इज केरला. नंबर 8, द अन्योदया दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? इट्स दीन दयाल उपाध्याय. Number 9, what is the theme for this year's World Pharmacist Day? Answer is Transforming Global Health. So World Pharmacist Day, Transforming Global Health. Number 10, FSSAI has made it mandatory to display best before date with effect October 1 on which products? So कौन से प्रोडक्ट पे मैंडेटरी कर दिया है बेस्ट बिफोर डेट शो करना FSSAI ने? ऑन स्वीट्स. ओके, नॉन पैकेज्ड एंड लूज स्वीट्स. Number 11, an iconic personality from film music world lost his battle to corona on September 25. Identify him. Answer is SP Balasubramaniam. SP Balasubramaniam. The 51st edition of International Film Festival of India IFFI will be held next year in Goa in which month? Answer is January. Number 13, which institution has replaced Medical Council of India with effect from September 25? आंसर इज नेशनल मेडिकल कमीशन. ये नया नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, नेशनल मेडिकल कमीशन. नंबर 14, हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन? एंड योर आंसर इज सुरेश चंद्र शर्मा, चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन. Number 15, Prime Minister Narendra Modi addressed which session of United Nations General Assembly? कौन सा सेशन किया है? Which number session of United Nations General Assembly? Answer is 75th session of UNGA. Number 16, the 4th edition of India-Japan Maritime Bilateral Exercise GIMEX was held in which area? North Arabian Sea. Okay.
नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ है। और एक चीज़ याद रखनी है, जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। ओके, बहुत ही आसान है, जे जापान, आई इंडिया, एम मैरीटाइम, ई एक्स एक्सरसाइज, जिमेक्स। Number 17. Which celebrity chef has authored the book Kitchens of Gratitude? So the answer is Vikas Khanna. Vikas Khanna की book है Kitchens of Gratitude. Number 18. Which famous film celebrity has authored the book The Big Thoughts of Little Love? ये किसकी बुक है? करण जौहर की बुक है ये। ओके, करण जौहर। Number 19. What is the title of the latest book by noted authoress Arundhati Roy? Answer is Azadi, Freedom, Fascism, Fiction. Number 20. One by One is a famous novel of which noted novelist? One by One is a famous novel of Ruth Ware. Number 21. Mohammad Hussein Roble has been appointed as the new Prime Minister of which East African country? आंसर इज सोमालिया। सोमालिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। नंबर 22. In a historic move, the parliament passed how many labor codes on September 23 reform the labor laws? To reform the labor laws. How many labor codes September 23 को पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं to reform the labor laws? आंसर इज 3 लेबर कोड्स पास किए हैं पार्लियामेंट ने ऑन September 23. Number 23. ICAR announced a hackathon to promote potential technology solutions for enhancing farm mechanization. What is its name? Answer is Kritagya. Number 24. World Tourism Day is celebrated on which date? Answer is 27th September. 25th. World Maritime Day is celebrated on which Thursday of September? Which Thursday of September? Last Thursday of September. Number 26. Name the noted atomic scientist and former Atomic Energy Commission chairperson who died of COVID-19. नोटेड एटॉमिक साइंटिस्ट है और फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन है जिनकी डेथ हो गई ड्यू टू COVID-19. आंसर इज डॉक्टर शेखर बसु. Number 27. Which recently passed bill aims to remove cereals, pulses, oilseeds, onions and potatoes from the list of essential commodities? Answer is the Essential Commodities Amendment Bill 2020. Okay, this is one of the bill जो जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है. ठीक है, फार्म बिल के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें से एक बिल ये भी है. नंबर 2. हमें इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि किन किन चीज़ों को रिमूव करने की बात हो रही है फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटीज. दे आर cereals, pulses, ऑयल सीड्स, अनियंस एंड पोटैटोज. 5 चीज़ों की हो रही है. ओके, cereals, pulses, ऑयल सीड्स, अनियंस एंड पोटैटोज. Number 28. Which bill passed recently by the parliament allows farmers to sell their produce anywhere in the country? And the answer is Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020. Number 29. A virtual bilateral summit was held between Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of which other country on September 26. So September में श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के साथ बाइलेटरल समिट हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की. Number 30. Name the 17-year-old girl from Gujarat, Surat, who has been appointed as regional ambassador for India by United Nations Environment Program, Tunza Eco Generation. So, UNEP के द्वारा रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया नियुक्त किया गया है एक 17-year-old गर्ल को फ्रॉम गुजरात, सूरत, एंड हर नेम इज खुशी चिंदालिया.
खुशी चिंदालिया. Okay. Number 31. Alexander Lukashenko was sworn in as president of which country for the record sixth term? Answer is Belarus. Number 32. Railways have planned for 100% electrification of its broad gauge routes by which year? आंसर इज 2023. 2023 तक जितने भी ब्रॉड गॉज रूट्स है इंडियन रेलवे के, ओके, उनको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का एक टारगेट रखा है रेलवेज ने. नंबर 33. विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 23 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज? आंसर इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ sign languages is celebrated on September 23rd. Number 34. Navies of India and Dash conducted a 2-day mega passage exercise in Indian Ocean on September 23 and 24. Answer is Australian Navy. Number 35. Which popular Bollywood actor has been named among the world's 100 most influential people by the Time magazine? Ayushmann Khurrana. Ayushmann Khurrana and Narendra Modi are the only two persons from India who has been named among the world's 100 most influential people by the Time magazine. Number 36. Who won the Tour de France, the most prestigious and most difficult cycle race in the world? Answer is Tadej Pogacar. तदेज पोगाकर हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से है तदेज पोगाकर? फ्रॉम स्लोवेनिया. नंबर 38. चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड दैट द बिगेस्ट फिल्म सिटी इन इंडिया विल बी बिल्ट इन हिज स्टेट? आंसर इज उत्तर प्रदेश. ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है कि बिगेस्ट फिल्म सिटी बनाई जाएगी यूपी में. Number 39. Which country accounts for the largest number of one-horned rhinos? So कौन सी कंट्री में है सबसे ज्यादा? इंडिया. Number 40. Which Indian state is home to largest number of one-horned rhinos? So इंडियन स्टेट जो है वो असम है. Number 41. The National Forensic Sciences University Bill 2020 proposes to establish National Forensic Sciences University in which city? So the National Forensic Science University गांधीनगर गुजरात में establish की जाएगी. Number 42. Which university in Gujarat is to be upgraded as the new Rashtriya Raksha University? Answer is Raksha Shakti University. So ये यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है गुजरात में, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, एंड इट विल बी अपग्रेडेड एज द न्यू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी. इसको नेशनल रक्षा यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा. नंबर 43. इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट व्हीकल. व्हाट इज इट्स नेम? सो द नेम ऑफ द हीट व्हीकल इज अभ्यास. Number 44. The Konkan Railway delivered 2 modern diesel electric multiple unit trains to which country? कोंकण रेलवे ने नेपाल को 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DMUC ट्रेन्स जो है वो डिलीवर करी है. Number 45. A direct cargo ferry service between India and Dash commenced for the first time on September 21. सो डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में स्टार्ट हुई है? इट्स मालदीव्स. इंडिया एंड मालदीव्स के बीच. नंबर 46. विच UN डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंडिंग सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशन टू जेंडर पे गैप? इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड ऑन September 28. Okay, International Equal Pay Day, September 28.
Number 47, the World Rose Day observed on September 18 is associated with which disease? So World Rose Day is associated with cancer. Number 48, what is the theme of this year's World Alzheimer's Day? सो वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है 2020 में मनाया गया ऑन सितंबर 21st. ओके, 21st September वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे. एंड व्हाट वाज द थीम वाज लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया. Number 49, which international day encourages people to rid beaches of the garbage? Answer is International Coastal Cleanup Day. Number 50, the International Coastal Cleanup Day is observed on which Saturday of September? Answer is third Saturday of September को हम Coastal Cleanup Day मनाते हैं. Number 51, who won the men's singles title in the Italian Open tennis tournament? So Italian Open tennis tournament में men's single कौन जीते हैं? Novak Djokovic. Dash won the women's single title in the Italian Open tennis tournament. Answer is Simona Halep. The Union government announced an increase in the MSP of wheat. What is the new MSP? MSP of wheat कितना है? 1975 per quintal. Number 54. In a first, 2 women officers have been selected to join as observers in which stream of Indian Navy? Fighter helicopters. Number 55. The RBI has mandated banks to fully automate classification and provisioning calculation process of which product? Answer is NPAs, bad loans, non-performing assets. Number 56. Name the former Union Minister for Rural Development who passed away in New Delhi 2004 से 2009 तक. रघुवंश प्रसाद सिंह. ओके, रघुवंश प्रसाद सिंह. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, 57. रघुवंश प्रसाद सिंह इज नोन एज फादर ऑफ विच नेशनल फ्लैगशिप स्कीम? ओके, रघुवंश प्रसाद सिंह को फादर ऑफ विच नेशनल फ्लैगशिप स्कीम माना जाता है? मनरेगा. नंबर 58. वर्ल्ड ओजोन डे कमेमोरेट्स दिस साइनिंग ऑफ डैश प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इन 1987. Answer is Montreal Protocol 1987 for ozone protection. Number 59. The ozone molecules are formed by how many atoms of oxygen? O3. So answer is 3. 3 molecules of oxygen. Number 60. The ozone layer helps in protecting our ecosystem from which rays? Answer is ultraviolet rays, UVRs. Number 61. The ozone layer is found in which layer of the atmosphere? Answer is stratosphere. Number 62. The salary allowances and pension of members of parliament bill, amendment bill 2020 proposes how much cut in salaries and allowances of MPs? कितना कट किया गया है? 30%. ओके, सैलरीज एंड पेंशंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की 30% कट. नंबर 63. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक हैज बीन conferred the Lifetime Achievement Award by Euromoney Awards of Excellence 2020? Answer is HDFC Bank. 64. Who is the managing director of HDFC Bank? So किसे मिला है Lifetime Achievement Award? आदित्य पुरी. Number 65. Name the 71-year-old senior leader of the ruling Liberal Democratic Party who has been elected as Japan's new Prime Minister. Answer is Yoshihide Suga.
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूलिंग पार्टी जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नंबर 66, लोकसभा passed the Banking Regulation Amendment Bill 2020 on September 16 for what purpose? So the Lok Sabha passed the Banking Regulation Amendment Bill 2020 to bring cooperative banks regulation at par with other banks. Number 67, name the noted scholar of Indian classical dance, art, architecture, and art history who passed away recently. Answer is Dr. Kapil Vatsyayan. Number 68, which public sector power engineering has entered into a MOU with the Swiss Rapid AG of Switzerland for development of maglev train projects in India? Answer is Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL. Number 69, which bank has tied up with Titan Watch Company to launch contactless payment services through watches called Titan Pay? Answer is State Bank of India. Number 70, the latest edition of the World Bank's annual Human Capital Index has put India at which rank? सो वर्ल्ड बैंक के एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? 116th रैंक. Number 71, which country secured the first rank in World Bank's annual Human Capital Index? So rank 1 has been secured by Singapore. Number 72, the World Patient Safety Day is observed on which date to create a global awareness of patient safety? It's celebrated on September 17th, World Patient Safety Day. Number 73, India's first exclusive private jet terminal was inaugurated at which international airport? कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली. Number 74, Dash has become the first country in the world to issue a sovereign sustainable development goals bonds. Answer is Mexico. So Mexico पहला देश बन गया है दुनिया का जो सोवरेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बॉन्ड्स को इशू कर रहा है. नंबर 75, which social media platform has teamed up with common services centers to launch a chatbot for citizens to receive digital literacy services? Answer is WhatsApp. WhatsApp ने टाई अप किया है विद CSCs, ठीक है, टू लॉन्च अ चैटबॉट फॉर सिटीजन्स टू रिसीव डिजिटल लिटरेसी सर्विसेज. नंबर 76, which global finance agency has assured $2 trillion to India to develop green buildings, improve public transport, and to expand renewable sources of energy? International Finance Corporation. Number 77, World Bamboo Day is observed on September 18 with the support of which organization? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है वर्ल्ड बैम्बू डे ऑन September 18th? Answer is World Bamboo Organization. Number 78, which country is the largest producer of bamboos in the world? Answer is China. Number 79, which state topped the first ever annual India Happiness Report measuring national well-being and people's happiness? Answer is मिजोरम. मिजोरम स्टेट जो है उसने टॉप किया है फर्स्ट एवर एनुअल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में.
Number 80, Justice Ruth Bader Ginsburg, a diminutive yet towering women rights champion, passed away recently. She was a senior justice in the Supreme Court of which country? जस्टिस रुथ बेडर गिन्सबर्ग कौन से कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे? सीनियर जस्टिस इन यूएस से सुप्रीम कोर्ट. नंबर 81, Armand Duplantis broke Sergey Bubka's 26-year-old outdoor world record in pole vault jumping. He is from which country? He is from Sweden. Okay. सो आर्मेंड ड्यूप्लेंटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड भी मिला है. नंबर 82, इन द रिसेंटली रिलीज्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक सिंगापुर को मिला है. नंबर 83, द सेंटर हैज सेट अप अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय अजय तिर्के to prepare a roadmap for regularization of land leasing in which sector? Agriculture. Number 84, what is the theme of this year's International Day of Peace? Answer is shaping peace together. This year means 2020. Number 85, International Day of Peace is celebrated on which date? So International Day of Peace is celebrated on date September 21st. Number 86, name the 35-year-old striker from Portugal who became just the second footballer to reach a century of goals for a national team. Answer is Cristiano Ronaldo. Which bank launched an international contactless debit card, signature Visa debit card, for high net worth individuals? Answer is Bank of India. बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं. सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो उनके कस्टमर्स होंगे जो हाई नेटवर्थ रखा करेंगे अपने अकाउंट्स की, उनके लिए ये स्पेशल सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं बैंक ऑफ इंडिया ने. नंबर 88, RBI has seized the banking operations by which payments bank? RBI has seized the banking operation of which payments bank? Aditya Birla Idea Payments Bank. Number 89, which state launched India's first integrated air ambulance service? Integrated air ambulance service. Not only air ambulance service, it's integrated. Okay. Answer is Karnataka. Number 90, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved asset monetization of subsidiaries of which power company? Answer is Power Grid Corporation of India Limited. So CCEA ने अप्रूव की है एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ सब्सिडरीज ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की. नंबर 91, गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी चेयर्ड बाय डैश टू असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स. राजीव महर्षि. So government has constituted a committee chaired by Rajiv Maharshi to assist in the assessment of relief to bank borrowers. ठीक है, असिस्ट करने के लिए कि असेसमेंट करनी है एक कि हम क्या रिलीफ बैंक बोरोवर्स को दे सकते हैं ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड. Number 92, which country will host the meeting of Council of Heads of Government of Shanghai Cooperation Organization on 29 and 30 November 2020? So SCO की हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कौन होस्ट करेगा? इंडिया.
Okay, 93 Shanghai Cooperation Organization, that is SCO, is a permanent intergovernmental international organization of how many countries? कितनी countries member है SCO की? 8 countries. Number 94, Reliance Industries Limited market cap crossed which milestone on September 10? So कौन सा milestone किया है पास? $200 billion. Market capitalization of $200 billion. Number 95, who has been appointed as the chairman of the National School of Drama, New Delhi? Answer is Paresh Rawal. Number 96, National School of Drama is a premier national institute set up by which union ministry? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर एनएसटी चलता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ओके. Number 97, which program has been launched for making the cities more walkable and pedestrian friendly? Answer is Streets for People Challenge. Number 98, a national evaluation center, Parak, has been set up for overall improvement in the evaluation system. What is full form of Parak? Full form is Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. Number 99, what is the expansion of acronym PISA, PISA, a program associated with educational evaluation? Answer is Program for International Student Assessment. Number 100, name the veteran Arya Samaj leader and social activist who passed away in New Delhi due to multi-organ failure. Veteran Arya Samaj leader and social activist Swami Agnivesh. Number 101, which is the second country, first being UAE, to normalize diplomatic ties with Israel? Bahrain is the second country and the first country was UAE. 102, which country played the crucial role in bringing together Israel and Bahrain? कौन सी कंट्री ने एज अ mediator हेल्प किया दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को अच्छा बनाने में? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 103, which state topped the second edition of state startup rankings announced recently by the government? स्टार्टअप्स के मामले में गुजरात is on top.